Hello बच्चों, let's read the given question. The question says which of the following conditions is correct in steady state? Option A, R1 C1 equals to R2 C2. Option B, R1 by C1 equals to R2 by C2. Option C, R1 R2 equals to C1 C2. Option D, none of this. So basically, to understand this question, we need to understand about the basic concept of the RC circuit, that is resistance and capacitance combination circuit. उसमें there are two important aspects that we need to keep in mind. First is the initial condition वाला case, initial condition, और when we say when t is equals to 0, इस तरीके से we can have the conditions given. या तो initial condition बोलेगा या फिर t equals to 0 पे switch is just closed. As such conditions में we can say capacitor behaves as if it is a closed, we can say it is a straight line. Basically अगर हम capacitor जहाँ पे भी होगा वहाँ पे we will replace this capacitor with a straight wire, right? क्योंकि वहाँ पे maximum we can say amount of current will be flowing in that situation. Maximum means increasing value of current is flowing in that case जब वो we can say initial condition होगी, क्योंकि capacitor is started in a process of charging. ठीक है, तो करंट उस पर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा होगा. एंड वी कैन से के instead of a capacitor we can replace it with a straight wire. So this is the case for a initial condition that we need to keep in mind. Second condition important है, that is steady state. Steady state जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि it is now fully been charged, right? Steady state में हम क्या करते हैं? स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, राइट? क्योंकि नो फर्दर चार्जिंग इज गोइंग ऑन या करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटर को हम शो करेंगे इट इज़ अ ओपन सर्किट. यहाँ पे ये एक स्ट्रेट वायर की तरह शो कर देंगे. जस्ट हम जहाँ पे भी कैपेसिटर होगा वहाँ पे हम वायर से रिप्लेस कर देंगे उसे. और इन स्टेडी स्टेट यहाँ पे भी कैपेसिटर होगा वहाँ पे हम उसे ओपन सर्किट की तरह शो कर देंगे या फिर ओपन कनेक्शन की तरह शो करेंगे, right? So these are the few important things that we need to keep in mind regarding the capacitors for RC circuit, right? अब यहाँ पे as per the question given steady state की बात हो रही है, that means यहाँ पे कोई current flow नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कोई current flow नहीं होगा. So we can say since no current flows in circuit, so we cannot have any relation with, between R and C, right? So in that situation हम देख सकते हैं कि since no current flows in the circuit, there is no combination possible. ठीक है, so from this we can say जो हमारा option match होगा, option will be matching with this is D. So I hope you understood the solution. All the best.